नमस्कार, वेलकम टू RCI नवशिखर चैनल। आप सभी का RCI के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडोलेसेंस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव प्रोफेसर अनीता जुल्का. She is a psychologist. She has done PhD in visual impairment and she is working in the Department of Education of groups with special needs in NCERT. So she'll be talking about the today's topic of discussion and giving the informations to our viewers. मैं अपने viewers को request करना चाहूँगी उनके इस regard में जो भी questions हैं तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008, 265-11-613. हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं या कोई भी जो आप केसेस लेते हैं उनके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. तो आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ. थैंक यू कविता. वेलकम मैम. जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इट्स रिगार्डिंग एडोलेसेंस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट. तो वी हैव टू मेन टर्म्स हियर लाइक एडोलेसेंस and visual impairment. So what is adolescence? Actually, I think that most of the people who are hearing me and listening to what we are talking about would be knowing or must have experienced, if they have children in the adolescence in their children or themselves, they may have seen some changes. I will be making a few I'll be presenting some slides and I'll be discussing with the trainees what is adolescence, what are the physical attributes, what are the implications of these physical attributes for visual impairment, what are the emotional attributes and what are the cognitive attributes, and how all these things, all adolescence stages of adolescence, changes in adolescence affect a visually impaired child. So I'll start my presentation. जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया आज की डिस्कशन के बारे में कि व्हाट शील बी टॉकिंग अबाउट, हमारे व्यूअर्स को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि पहले तो हम जानेंगे कि एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है. वी नो दैट वी हैव डिफरेंट स्टेजेस, एवरी इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. हमारी लाइफ में हम बॉर्न होने से लेकर डेथ तक वी हैव डिफरेंट स्टेजेस, और उन स्टेजेस में हर इंडिविजुअल एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है, और साथ के साथ उस हम टाइम पीरियड को एक लिंक करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ. तो विजुअल इम्पेयरमेंट की हम बात करेंगे. इसकी डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए. हम एक छोटे से ब्रेक के बाद इसकी डिस्कशन करते हैं. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है. मान अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है.
वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि वो आज का जो हमारा डिस्कशन है इट्स रिगार्डिंग एडोलेसेंस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो वो किन किन बातों पे स्ट्रेस देंगी और इन्फॉर्मेशन हमें देंगी। तो मैं व्यूअर से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनके इस रिगार्ड में कोई भी डाउट्स हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। तो आइए हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एडोलेसेंस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट की। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी व्हाट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट। नाउ विजुअल इम्पेयरमेंट वी ऑल नो इज covers both blindness and low vision. And what is adolescence? Adolescence is a term which is derived from some word called adolescere. ये एक लैटिन वर्ड है एंड इसका मतलब है, इसका अर्थ है ग्रोइंग इनटू मैच्योरिटी। इट इज़ अ पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यानी ये लड़कियों में थोड़ी पहले और लड़कों में थोड़ी देर में शुरू होता है। और इसको बहुत बार बातचीत में एंड आपने राइटिंग्स अगर पढ़ी हों, किताबें पढ़ी हों इसके ऊपर, कोई भी किसी ने इसके बारे में पढ़ा हो, तो जनरली इट इज़ कॉल्ड अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस इसलिए क्योंकि इसमें इतने चेंजेस आते हैं शरीर में और इमोशनली और कॉग्निटिवली कि हम एक तरफ से एक बच्चा बर्डन हो जाता है उस यंग एज में, इतने सारे चेंजेस देख के अपने में और दूसरों से उसके रिलेशनशिप भी इसमें शुरू होते हैं। तो एक तरह से इस तरह के स्ट्रॉमी चेंजेस उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस कहते हैं। बट आई विल कॉल इट अ पीरियड ऑफ चेंज एंड चैलेंज। स्टार्ट्स विथ प्यूबर्टी। There are biological series of events which I am going to talk about later, and teenagers bring home tense energy based on the struggle for independence and autonomy. Generally what happens is, as you have read in the slide, the teenagers, if you've seen some teenagers in school or at home, they are very rebellious. They want to have their say and they want to they're very boisterous, very full of energy. बहुत उनमें ऐसा लगता है हर बात में मैं करने की उनकी इच्छा सी रहती है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पेरेंट्स कई बार और ऊंचा बोलते हैं, बच्चे भी और ऊंचा बोलते हैं, दोनों ही सही होते हैं, दोनों में एनर्जी होती है। और इस तरह से जो बच्चे में ये चेंजेस आप देखेंगे, आप ये मत सोचिए कि उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ही हैज़ गॉट अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और ही इज़ हैविंग सम स्ट्रेस। इट इज़ ऑल्सो हिज hormonal changes which are coming. So as the slide shows, it is a Latin word adolescere and it is a period between childhood and adulthood. What are the physical attributes of adolescence? As the slide shows, it is marked by dramatic physical changes in both growth rate and sexual characteristics. For example, development of different parts of the body, appearance of the hair on the body, voice change and underarms perspiration in boys, etc. Complete bulk of development till they leave school. Usually begins at the age of 10 to 11 years in girls and 12 to 13 years in boys. जैसे कि ये स्लाइड बताती है, कई तरह के चेंजेस बॉडी में आते हैं। आपने देखा होगा लड़के एकदम लंबे हो जाते हैं, लड़कियां भी लंबी हो जाती हैं। लड़कों के मुंह, शरीर पे और इवन फेस पे आप थोड़े थोड़े बाल देखते हैं कि बाल उनके उगने शुरू हो गए हैं। फिर उनकी आवाज़ भारी सी हो जाती है। लड़कियों में भी कई चेंजेस आते हैं, बॉडी के कई डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होते हैं जो पहले नहीं डेवलप थे। बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें एक एडोलेसेंट बच्चा खुद भी इन चेंजेस को देख के हैरान होता है और वंडर करता है कि ये चेंजेस एकदम इतने ज़्यादा एक साथ कैसे आते हैं। दूसरा, ज़्यादातर मोर एंड मोर जो हम डेवलपमेंट है, बल्क का मतलब है लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट, 3/4 से ज़्यादा ही डेवलपमेंट आपकी जब तक बच्चा स्कूल नहीं छोड़ता, हाई स्कूल छोड़ता है, तब तक हो जाती है। बाय द टाइम द चाइल्ड लीव्स हाई स्कूल, द चाइल्ड इज़ क्वाइट डेवलप्ड. Only 1/4, I think less than 1/4 development happens after the child leaves school. So you can imagine from the age of 10 for girls and from the age of 12 for boys, this is a period of real storm and stress, and it is a challenge. Challenge in the sense the child has also realizing he is no longer a child. He is also realizing that he is not an adult yet, but he has to think about his life choices कि मैं क्या करूँगा, क्या बनूँगा, मुझे अपनी अभी सिलेक्शन करनी है। तो इस तरह इसमें अनेक प्रकार के चेंजेस दिखाई देते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि एडोलेसेंस इट्स अ पीरियड
for challenge and changes and the storm and stress. So can we say that it involves all the changes, that natural and the artificial changes? Natural like all the pubertal changes और hormonal changes जो भी individual में होते हैं, may it be a male और female. और दूसरी बात जैसे कि जो artificial changes होते हैं environment से, जिसे उनका एक ग्रुप फॉर्म होता है एंड दे फील दैट दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस देमसेल्व्स. कविता, मैंने जैसे बिगनिंग में आपको बताया था कि आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज एट्रीब्यूट्स. बिगनिंग में आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट फिजिकल, जी, जैसे शारीरिक चेंजेस क्या होते हैं और उससे संबंधित किस प्रकार से विजुअल इम्पेयर बच्चे में वो चेंजेस आते हैं. उसके बाद हम बिल्कुल आपके जैसे आपने कहा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इमोशनल चेंजेस, the social changes, the cognitive changes, all come in a package. But we'll start right from the beginning with the physical ones, because this marks, the physical attributes marks the beginning of adolescence, and it's a very, very important thing. Baki sab changes could be happening along with it, but they happen with everybody, and you need a few strategies for visually impaired. But for physical attributes, these are the most important changes, because they make a kind of a drastic difference to a child's life. Now, as I said, the voice deepens, भारी आवाज़ हो जाती है, हेयर ग्रोथ हो जाती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई तरह के चेंजेस आते हैं. व्हाट हैपन्स इन द विजुअली इम्पेयर्ड? ये तो मैंने सब बच्चों के लिए बताया है. क्या स्पेसिफिकली अब मैं बताऊंगी कि विजुअली इम्पेयर्ड में कोई इस तरह के खास चेंजेस और एसोसिएटेड हैं या कुछ लेकुनाज या कमियां पाई जाती हैं. Visual impairment में milestones are the same for the visually impaired like other children, but the emphasis on body perfect in the culture, that means being intact physically or having no cosmetic flaws, is critical to life satisfaction. Matching one body and appearance to whatever the popular image of body perfect. Visually impaired need feedback from the sighted individuals. This causes significant stress in visually impaired if they have problems in appearance. जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा, माइलस्टोन सेम ही होते हैं, यानी जो बल्क ऑफ डेवलपमेंट आपने बाकी बच्चों, साइटेड बच्चों में पाई जाती है, वही विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में भी देखी गई है, उसी लेवल पे वो बढ़ती है. लेकिन जो इसमें दूसरी बात है, एम्फेसिस ऑन बॉडी परफेक्ट, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर उनके अपीयरेंस में, यानी उनके आईज़ में कुछ लुक्स में क्रुकेडनेस दिखती है, या एक आई ठीक नहीं है, वाइट है, या कुछ और जॉ में कोई प्रॉब्लम है, कोई साथ में और अपीयरेंस की प्रॉब्लम है, तब वो बच्चे की जो बॉडी परफेक्ट इमेज जो कि इस एज के बच्चों में पाई जाती है, आपने तो आजकल देखा ही होगा, इट इज़ सच अ, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इट्स बिकम सच अ क्रेज टू लुक गुड. जी, ऑल एम्फेसिस इज ऑन एस्थेटिक्स, यानी वन शुड लुक गुड, वन शुड वेयर गुड, वन शुड बी पॉपुलर, ये सब everything should be perfect. परफेक्ट. एंड बेसिकली बॉडी इमेज के ऊपर बहुत एम्फेसिस है. यू सी ऑल दीज मॉडल्स, ऑल दीज एक्ट्रेसेस, कभी जीरो साइज, कभी ये साइज, कभी वो, इस तरह की बातें जो बहुत बॉडी पे एम्फेसाइज करती हैं परफेक्शन में, वो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. इसलिए बन जाती है कि वो क्या पॉपुलर है, ये एक तो ये है कि उनके फिजिकल अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरी बात ये भी है कि क्या पॉपुलर है, क्या उसको करने के लिए क्या पहनना चाहिए, कैसे लुकना चाहिए, देखना, बात करनी चाहिए, और किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए. दे कैन नॉट हैव दैट फीडबैक ऑन देयर ओन. दे नीड समबडी टू टेल देम दैट दिस इज व्हाट यू शुड वेयर, दिस इज हाउ यू शुड लुक, दिस इज द पॉपुलर दिस थिंग. अब पॉपुलर का तो आपने देखा ही होगा कि जैसे गजनी मूवी, कई आप लोगों ने सबने देखी थी, गजनी हेयर स्टाइल, वो बिकेम सो पॉपुलर. The same way, you know, sadhana cut, long time back when I was young, I used to wear sadhana cut hair. इस तरह जो पॉपुलर हीरो हीरोइंस होते हैं, उनकी भी लुक के ऊपर वो लोग आजकल बहुत एम्फेसिस देते हैं. तो ज़्यादातर बच्चे उसी तरह लगना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं, एंड दैट causes a lot of problem for visually impaired people. And they, if they are not given the feedback, या उनके आसपास उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके सिबलिंग्स या उनके कम्युनिटी मेम्बर्स या उनके पीयर्स अगर उनको ये सब नहीं बताते कि हाउ यू आर लुकिंग, व्हाट यू शुड बी वेयरिंग, या आउट ऑफ फैशन तुम्हारी शर्ट है, या ये तुम्हारी पैंट ठीक नहीं है, या तुम्हें इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह हैंड शेक करना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है. मैम जैसे कि आपने बताया कि माइलस्टोन सबके सेम होते हैं, और विजुअल इम्पेयरमेंट अगर इंडिविजुअल्स की हम बात करते हैं तो दे नीड फीडबैक फ्रॉम अदर्स, पॉजिटिव फीडबैक एंड आल्सो इंफॉर्मेशन. जी,
कि भाई क्या सही पॉपुलर है। जी, तो इसमें अगर हम देखें कि प्रॉब्लम्स, जैसे एक विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल है, कॉन्जेनाइटली है एंड एक्वायर्ड है, तो जो बाय बर्थ जिसको प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है, पर हमने जैसे ज़्यादातर देखा है जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जन्म के बाद या एनी एक्सीडेंट, ट्रॉमा और इन्फेक्शंस वगैरह से विजुअल इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट कंडीशन, तो आई थिंक उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। और अनदर थिंग इज दैट चिल्ड्रन हु आर बोर्न ब्लाइंड और हु हैव आल्सो स्टडीड इन स्पेशल स्कूल्स आर मच मोर इनोसेंट than children who are going to regular school. The reason for this is that आपस में अगर वो सब विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो कोई उनको कंपटीशन नहीं है, सोशल कंपटीशन नहीं है, किसी तरह का फिजिकल भी कंपटीशन नहीं है. बट व्हेन दे आर स्टडिंग इन इंक्लूसिव स्कूल्स और रेगुलर स्कूल्स वेयर दे अदर चिल्ड्रन, साइटेड चिल्ड्रन, तो उनकी वो इनोसेंस नहीं रहती, एंड दे वांट टू डू लुक लाइक द अदर चिल्ड्रन, दे वांट टू बिहेव लाइक द अदर चिल्ड्रन, दे वांट टू हैव गर्लफ्रेंड्स लाइक द अदर चिल्ड्रन. तो ये सब बातें उनमें आ जाती हैं. सिमिलरली जो बच्चा बचपन से है उसने कई चेंजेस देखे नहीं हैं और उसकी एक्सपेक्टेशंस अपने से थोड़ी कम हो जाती हैं, उसका एक्सेप्टेंस ऑफ हैंडीकैप भी ज़्यादा होता है कि डिसेबिलिटी ज़्यादा होता है. द पर्सन हु बिकम्स एक्वायर्स विजुअल इम्पेयरमेंट हैज़ सीन द गुड थिंग्स इन द लाइफ. इन वन वे इट इज़ एडवांटेजेस कि वो पैटर्न्स जो बाकी लोगों को अच्छे लगते हैं वो जानता है और उसको मालूम है कि बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट है, उसके एक्सपीरियंसेस इंटैक्ट हैं, तो उस तरह से उसको वो एडवांटेज होती हैं. बट एज यू से इमोशनली इट इज़ अ वेरी सैड एक्सपीरियंस. जी. इन फिज़िकल जो चेंजेस हैं और उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट पे इसका क्या असर पड़ता है, उसका मैं इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी वो मैं बताऊंगी अभी. दे मे बी टीज्ड इन स्कूल and at play because of not being able to conform to age appropriate social behavior. If they don't have information how the other children are behaving, they do not conform. Lowering of self-esteem because of poor body image, segregated because of certain stereotype mannerisms like rocking, flicking of arms, adopting certain ways of walking, talking, standing, posturing, difficulties in fluidity of movement, tools used to improve their functional ability like optical devices, long cane, braille output devices set them apart. So the implications of being different physically for the visually impaired, I've just read them out, I like to explain them now. What happens is that when you are not like others, वैसे भी अगर visual impairment भी ना हो, अगर बच्चा कोई मोटा होता है या छोटा होता है उसको भी दूसरे बच्चे टीज करते हैं, तो ये तो विजुअल इम्पेयरमेंट में अगर आपको एकदम सेट अपार्ट हो जाता है तो उसमें टीजिंग तो होती है. प्लस आपकी जो मूवमेंट है, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट गॉन थ्रू द सेम अर्ली stages, development stages like others, because in others children crawl on their own. For the visually impaired child you have to tell that child कि इधर कुछ नहीं है और इधर, because they are not able to imitate and copy the same. Yeah, so their movements are generally different from others, and जिसको हम मैंने बोला है कि कई मैनरिज्म्स वो डेवलप कर जाते हैं to give their stress release भी उनसे होता है. उनको rocking of arms and you know आपने देखा होगा मुंह ऐसे हिला रहे हैं या ऐसे, इस तरह से कई पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चे हमारे बच्चे के साथ नहीं इसको बिठाना क्योंकि इसमें इस तरह के चेंजेस आते हैं. सो इन अ वे दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. इन सब चीज़ों से उनकी इतनी पॉपुलर इमेज नहीं रहती, और बिकॉज दे आर नॉट पॉपुलर, बिकॉज देयर सोशल रिलेशंस आर नॉट देयर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. यानी अब आप देखेंगे 16-17 ईयर्स के बच्चे भी ड्राइविंग सीखने लग जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ में जाने लग जाते हैं, वो अकेले एक दूसरे के यहाँ जाते हैं. वो इंडिपेंडेंस भी इन बच्चों में नहीं होती. एज अ रिज़ल्ट ये बच्चे हमेशा सेल्फ इस्टीम इनकी बाकी बच्चों से कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ द फिजिकल चेंजेस और फिजिकल डिफरेंसेस कम रहती है. मैम जैसे ये आपने बताया कि स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स होते हैं, मतलब रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों में, तो बेसिकली इनका रीज़न क्या होता है, क्यों ये बच्चे मतलब इन्वॉल्व रहते हैं इन रेपिटेटिव बिहेवियर्स में? नो, इट डिपेंड्स. लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो आर इन दिस, एंड आल्सो it's just this that when you are not able to communicate and see the body language of others, you become a self exploratory person. तो उसके रीजन से होते हैं. वी विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ दैट बिकॉज दैट बिकम्स अ फुल टॉपिक, क्यों मैनरिज्म्स का होता है. लेकिन जो मेरा फोर्थ पॉइंट था इसमें, आई लाइक टू डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट पॉइंट विच सेड दैट फंक्शनल एबिलिटी टूल्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज
the child may need to wear spectacles, thick spectacles, or child may need to use a long cane, or child may need to use a microscope or any other technique for education, walking, mobility, braille devices. Now because of becoming gaining this popular image, these children abandon these tools. ये एक टीचर्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि इन टीजिंग की वजह से या बाकी बच्चों से डिफरेंट ना लगना चाहें तो वो बच्चे ये चीज़ें पहनना ही नहीं चाहते, इनको यूज़ ही नहीं करना चाहते. अच्छा, कोई और बच्चा है जैसे उसके स्पेक्टिकल्स लगी है तो वो तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के अपना काम कर लेगा, लेकिन इन बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एड्स एंड अप्लायंसेज जो भी यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल एड्स वगैरह, उनको पूरी यूज़ करें. सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को एक हमारे कल्चर में, स्पेशली हमारे कल्चर में, दे हैव टू लुक वेरी ब्यूटीफुल. सो इट्स फिजिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर गर्ल्स डेवलपमेंट. तो उनके लिए तो फिजिकल एस्पेक्ट के चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनका उन पे प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्या करना चाहिए इफ़ दीज आर चेंजेस, जिनकी ये इम्प्लीकेशंस है विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, फिजिकल चेंजेस के लिए. तो टीचर्स को और बाकी लोग जो उनको देखते हैं, पेरेंट्स को, सबको क्या करना चाहिए इनके लिए. सबसे बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात है कि सपोर्ट फैमिली का बहुत ज़रूरी है. जब भी बच्चा सेल्फ इमेज डाउन होती है या सेल्फ कंसेप्ट उसका डाउन होता है तो उसको सपोर्ट फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है. अगर माता पिता ये समझाएं और उसको बार बार ये बताते जाएं कि तुम यू गुड इन दिस, यू गुड इन दैट, यू लुकिंग गुड, मतलब इस तरह से उसको एक तरह से उसको ये लगेगा कि यस आई कैन लुक गुड एंड आई एम ऑल्सो. एक बड़ी डिस्ट्रेस्ड और डिप्रेस स्टेज उसके लिए नहीं रहेगी. दूसरा, जो स्ट्रॉन्ग पीयर नेटवर्क, feedback from sighted individuals and counseling. Now strong peer network means that children should, the teacher should develop friendships in the classroom, so that when you have sexual changes, when you have body parts development, other children, they get 60 to 80 information through vision, but these children have to be told that these are the changes which are coming, this will lead to this, and you may feel this, and all this thing is okay if either a counselor can discuss or parents. बाकी लोगों के साथ, माता पिता के साथ डिस्कस करना किसी भी बच्चे के लिए ये मुश्किल होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीयर नेटवर्क बहुत उनका स्ट्रॉन्ग रहे. मैम, जैसे कि आपने एक फैमिली सपोर्ट की बात करी, तो उसमें अक्सर हमने देखा है कि फैमिलीज़ में फर्स्ट इज़ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, कि हमारे फैमिली में भी ऐसा कोई बच्चा नहीं है और ऐसा कुछ मतलब रीज़न ही नहीं है, पर हमारे बच्चे को ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई. तो उस बारे में मतलब अगर ये क्वेश्चन रेज होता है तो हम फैमिली को किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं. देखिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, हम भी अगर कोई ट्रेन मिस कर देंगे या वो हो जाएगा तो यही होता है ना बात कि हमने ये क्यों किया, हम ऐसा कर सकते थे, हम जी. फिर एक पेरेंट्स का मोर्निंग स्टेज होता है कि हमारे साथ ये हुआ है और शॉक में रहते हैं, फिर मोन करते हैं कि भाई हम हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और क्यों हुआ है, हमारे कर्मों का फल इस तरह का था. तो हम लोग अपने प्रोग्राम्स में, इवन सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुना होगा आपने, उन सब में पेरेंटल काउंसलिंग को एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मानते हैं. यानी पेरेंटल काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है. उनको भी ये बताना है कि बच्चों में सिर्फ विजन ना होने से बाकी कमियाँ नहीं आएंगी अगर पेरेंटल सपोर्ट हो. जो मैं आपको इम्प्लीकेशंस बता रही हूँ वो तभी आती हैं जब पेरेंट्स का सपोर्ट या पीयर सपोर्ट या जो एनवायरनमेंट बाकी बच्चों को मिलती है वो इन बच्चों को नहीं मिल पाती, तब कमियां रह जाती हैं. लेकिन अगर पेरेंट्स पूरी तरह सपोर्ट करें, एक्सेप्ट करें कि चाइल्ड में ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अलावा चाइल्ड में ये स्ट्रेंथ्स है, बच्चा भी उसको एक्सेप्ट करेगा. तो दोनों तरह से ये बात बहुत ज़रूरी है. और कई बार क्या होता है, बच्चे को डिप्रेशन और सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना डाउन हो जाता है कि वो कुछ भी करने में मोटिवेटेड नहीं रहता. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है. और जो मैंने पहले बताया, बॉडी परफेक्ट इमेज, फिटिंग इनटू द बॉडी परफेक्ट इमेज इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी. सम पीपल मे कीप ट्राइंग एंड एनोरेक्सिया आपने सुना है, बुलिमिया आपने सुना है, खाना पीना भी छोड़ देते हैं तो लुक्स, ये सब बातें एक तरह से कह लीजिए एडिक्शन हो जाती हैं. लेकिन बॉडी परफेक्ट कभी भी किसी की हर वक्त नहीं रहती. सो दिस इज एन कॉन्सेप्ट विच शुड बी played down by teachers and in the classroom. Somehow these strategies should be worked out. अगर हम देखें, somehow family is able to accept the child. ठीक है कि
पहले डिप्रेशन में थे वो लोग, बट अब वो सोचते हैं कि नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड। बट ये होता है कई बार इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं वो कम्युनिटी के रिएक्शन से या आसपास के सोसाइटल रिएक्शन से, और सोसाइटी का रिएक्शन होता है एक उस बच्चे की तरफ कि बेचारा, लाइक सिंपैथी बैकग्राउंड। तो उस केस में फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस तो हर तरह से रहता है, सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी रहता है। मैं तो इस चीज़ को कहूँगी कि जितनी लड़कियों को प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली रूरल सोसाइटी में, वैसे ही एक पूरा एक वो सिंड्रोम ऐसा है। लेकिन एजुकेशन मेक्स अ डिफरेंस। अगर इसीलिए जो हम सर्व शिक्षा अभियान वगैरह की बात करते हैं, अवेयरनेस मेक्स अ डिफरेंस। आज आप सक्सेस स्टोरीज बताइए कि कितने विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं जी। और उनकी कई एग्जांपल्स हैं। तो जब भी पेरेंट्स से बात किया जाए, कोई भी सोशल वर्कर या टीचर या कभी भी बात करे, तो उनको ये कन्विंस करना चाहिए कि ये बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट होने के बावजूद ये बच्चा उतना ही प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी है जैसे कि बाकी बच्चे। वो भी उनको वैसे ही खिला पिला सकता है जैसे कि बाकी बच्चे। द वेरी थॉट कि भी ये किसी काम का नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि एक बच्चे से जो एडोलेसेंस स्टेज पे ही था, जब हम मिले तो उसको वो एक स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा था। तो स्पेशल स्कूल वालों ने मेरे को बताया कि ये बच्चे को हम लेके आए बहुत मुश्किल से, पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे थे, कहीं नहीं कुछ करने दे रहे थे, घर में बैठ के बस वो खाता था, पीता था और बैठ जाता था। तो जब उन्होंने कहा कि इसको भेज दीजिए, तो पेरेंट्स ने कहा जैसे गाय भैंस बंधी हुई है, ये भी घर में रह ले। तो इस तरह का थिंकिंग कि ये प्रोडक्टिव मेंबर्स नहीं है सोसाइटी के, ये इनके बस का कुछ नहीं है, इस तरह की थिंकिंग बच्चों को भी अफेक्ट करती है, उनके सेल्फ एस्टीम को भी। तो इससे मतलब ये कि ऑब्वियसली बच्चा ये सोचेगा कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डाउन होगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन होगा, और वास्तव में वो बच्चा जो कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा जी। तो इन बातों से हमें कॉशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, और माता पिता को भी ये बताना चाहिए कि बच्चे उतने ही काबिल हैं, अगर उनको पूरी तरह से एनवायरनमेंट ठीक मिले तो उतने ही काबिल हैं जैसे कि बाकी बच्चे होते हैं, और उतने केपेबल ऑफ अर्निंग एंड प्रोडक्टिव मेंबर हैं। क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते सोसाइटी में और इकोनॉमिक्स में, घर में, तो उनको सोचा जाता है कि ये बर्डन है जी। पर ये बच्चे बर्डन नहीं होते अगर उनको पूरी तरह से एनवायरनमेंट मिले जी ठीक तरह से। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि एडोलेसेंस स्टेज होती है, और उसमें अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, और उसके लिए उसको फीडबैक की ज़रूरत होती है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये हमारे एक्सपर्ट इस बारे में इंफॉर्मेशंस दे रहे थे। बाकी की डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके।
बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एडोलेसेंस का टाइम पीरियड जो होता है, इट्स चेंजेस एंड चैलेंजेस, स्टॉर्म एंड स्ट्रेसेस। और उसके बाद में हमने देखा इन कॉन्टेक्स्ट टू विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं और उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इसके बारे में और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अब मैं बताऊंगी about the cognitive attributes associated with adolescence. Actually, they are not because of adolescence; they are because of that age range. Like one has developmental stages, and during that developmental stage, there are many cognitive changes also faced by adolescent children. What are the cognitive changes? Beginning of abstract thinking and creativity. Now, before this, children were talking about concrete, and this is abstract thinking. Thinking beyond concrete, development of number of viewpoints, development of independent thinking and decision, clothing, friends, etc. Now, what this means is, beginning of abstract thinking is actually, and for an example, I'll give you, you talking about feelings like happiness. Now, happiness you cannot see, happiness you cannot touch, but you know what happiness is. These are what are abstract concepts. A time comes with the age development of the child that the
concrete experiences, like if you want to touch something and know animal models and all, you can show, but a time comes that without that concrete thing, people can have a concept of a thing, like sea. Now you can't touch sea, but you know what sea is like. Most of the visually impaired children have problems with concepts like this, because especially concepts of distance, like forest. They don't know what actually forest looks like, they can only touch and know. So concrete, they've always learned to touch and understand the things concretely, but when it comes to abstract concepts, they have a lot of difficulty. Another thing which happens with them is that they are not able to see anything. Whatever they get is through the auditory input. You all must have heard the story of 6 blind men and elephant. I am sure we've been hearing it right from the childhood, and this is like a huge elephant and 6 blind men trying to get the concept of what an elephant looks like. Now the one, they are all getting it through touch. One person touches the ears and he says they are like fans. The other person touches the trunk and he says that this is like snake, elephant is like snake. The third person touches the trunks and they say this is solid like a spear. So their concept is disjointed, while for a sighted person, the disjoint thing, they can make sense out of it. Supposing if they don't even see, if they see a figure of a woman far away and through her hair and all, they can make out she's a woman and he's not a man. So these kind of disjointed perceptions or stimulation can be joined together because of sight, but the perspective in visually impaired children always remains disjointed because of visual problems. Another thing which happens with them is that they have at this stage you have a number of viewpoints. Now it means that you can hold your viewpoint, Kavita can hold another viewpoint, we all can hold a viewpoint, but development of viewpoints happens at the adolescent stage. Everybody has a view, opinion, and the more experience you have, the more exposure you have, the better opinions, the more viewpoints you have. And finally, in this slide I had shown the independent thinking. Now what clothes to wear, what friends to have, where to go, what not to do, what to do, all this independent thinking develops in the thing. These are all cognitive attributes. Ma'am, one viewer want to ask a question. As we are talking about the cognitive attributes, so our viewer Vasudha wants to ask कि there is a changes in the girl, और जैसे हमने physical changes की बात करी थी, और अगर हम maturity की बात करते हैं तो हमारे में different changes होते चले जाते हैं. तो एक विजुअल इम्पेयर्ड लड़की है तो उसके मतलब उसको इस चीज़ की कैसे हाउ कैन शी फील और हाउ कैन शी गेट द नॉलेज कि इट्स अ पार्ट ऑफ हर लाइफ एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू हर, लाइक एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, girls with visual impairment are very soft towards these things because they are not well informed, they are shy in asking other people. So they do need, when all these changes happen, they do need a lot of psychosocial supports. And that can only come from friends, from their elder sister or somebody in the family, some neighbor or somebody who's they are close to. It is very important for a girl to understand these changes in the body, because if she doesn't understand those or somebody doesn't guide this thing, she can be further teased, she can be taken advantage of. So many news items we have read that where girls have been taken advantage of because they did not know that when they are mostly what happens, many visually impaired children like to touch other to know how the other person looks like, or they just want to touch and feel the other person. So for girls, they have to be told that this is not a done thing when it comes to a certain level of maturity. Some restrictions are there. So these psychosocial supports are a must. This can be through a counselor, through a parent, or a good informed teacher. Now I'll come to the implications of development of cognitive attributes. Now, as I said, there is a difficulty in developing whole perspective, as only fingertip perception. An example I'll give later is of elephant and 6 blind men. I discussed it earlier also, I'll discuss it now more in detail. Visual impaired children cannot process information as a whole but sequentially, cannot make sense of disjointed inputs,
they have difficulty in acquiring abstract concept, especially of distance and inaccessible through touch. Just for example, planet, star, color, body language, facial expressions. Their concepts are generally based on stereotypical understanding. They are rigid in thinking patterns because of lack of consistent realistic inputs and incidental learning. They have misunderstanding of full spectrum of choices. Now, this is a very important slide and I would like to go over it point by point. The first thing I talked about was difficulty in developing whole perspective. Like I gave an example of elephant and 6 blind men. All of us have read about that. So, you can imagine, I asked the child once, what does a circle mean? Now, the child did not know what the circle meant, except he would have touched some ball. He would have touched something marble which could be round, but not a circle. To give a concept of circle, I said, think about things which are round and you can touch them round, your finger can go round like that. I tried to make him go through that circle motion. He said, okay, it's like my roti which I eat. So, these concrete things are very important. Without touching the whole thing, the whole perspective is not there. But when it comes to abstract concepts, like I said earlier, the whole perspective is a very important thing which blind children don't have. मतलब real object से relate करना, it's very important. Real objects नहीं, I want to say objects which are at distance, objects which they cannot touch, objects they cannot touch as a whole. So, they get the disjointed parts. An example is of an elephant. They can never get a concept of elephant unless and until it is given in a small model. If you touch the real elephant, they can never get a concept because it's too huge for them to join it together as a one perspective. So, as a result, they always get concept of different parts. Like I said, spear, fan, trunk is like snake, elephant is like a snake. Segregated, disjointed parts. Now, the far off concepts like star, planet, and also the ones which are told through somebody else, colors, they don't have the real concept of all these things, and this is a problem in their academics. When they are doing their studies, all this makes a difference. Now, when I say concepts based on stereotypical thinking, it's a very important thing. What happens is the concepts they gain is because of somebody else. Somebody tells them this is like this and this is like this and this is like this, so it looks like this. Now, they only think like that. Now, supposing if they see only, they know only about a yellow leopard, they won't have a concept of a white leopard till somebody tells them. So, stereotypical thinking means that whatever they are told, their concepts are limited to that because they have no incidental learning. Incidental learning means that once you want to go and open the door, you know this is the thing you have to open, this is a latch you have to open, somebody has to tell them everything. So, they have no incidental thinking. So, as a result, because of lack of these experiences, their concepts are very, very limited, and because of that, they don't even have choices. They don't know what to do. They can't be flexible. If this is not there, then they can do this. If this is not there, they can do that, because most of the time others can see, and 60 to 80% think they can realize by seeing it, this can happen, that can happen. But for a visually impaired child, he doesn't know. He has very limited choices. Because visually impaired, जो अगर हम individuals की बात करते हैं तो उसमें imitative and incidental learning की कमी होती है. इनकी कमी होती है. And another thing I feel is that when I talk about rigidity in thinking patterns because of consistent inputs. Now, if somebody tells them black is the color of bandits, डाकू लोग पहनते हैं. So, what happens is they associate black with bandits only, or white is the color of mourning. So, they will always think white is a bad color. So, these kind of stereotypical thinking and rigid patterns, because of that, these children do suffer academically. But if academic inputs are given through parents and some environmental activities given to them, they can make up for the lost inputs. I'm sure lack of incidental learning you'd like to explain a bit more, because this is a very important concept cognitively. And I would suggest that if you can explain more in Hindi also, or you would like me to explain, because I think incidental learning is very important for developing choices in life and becoming independent and removing the insecurities, which becomes a problem for the visually impaired because they have no such experiences.
Would you like to say something? जी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं तो जैसे अगर वो जन्मजात दृष्टिबाधित हैं, वो जन्म से ही नहीं देख सकते हैं, तो उनमें लर्निंग अगर हम बात करते हैं इमिटेटिव लर्निंग एंड इंसिडेंटल लर्निंग, द टर्म इटसेल्फ एक्सप्लेन्स लाइक इमिटेटिव लर्निंग टू कॉपी। जैसे कि जो आम बच्चे होते हैं, अगर हम छोटे अपने परिवारों में भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली में भी, कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर देख रहे हैं कि उनके घर में जो बड़े लोग हैं वो ब्रश कर रहे हैं, तो वो भी ब्रश को लेके इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द इमिटेटिव लर्निंग टू कॉपी द अदर पर्सन थिंग्स। और इंसिडेंटल लर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे बच्चा देख के सीखता है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर नाइफ को अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे अगर हमें चोट लग जाती है, तो इट्स रिलेटिंग द कॉज दैट अगर हम नाइफ को ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो उससे हमें चोट लग सकती है। लेकिन अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं तो उनमें इस जैसे वो देख नहीं सकते, तो इसलिए वो इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें उनको एक इन्फॉर्मेशन, इस बारे में इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको इस बारे में पता लग सके कि अगर हमें नाइफ यूज़ करना है तो उसको केयरफुली यूज़ करना है इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी मेजर्स। तो अगर हम एक ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विजुअली इम्पेयर्ड अगर बच्चों की या एडल्ट्स की जो हम बात करते हैं तो उसमें हमें फीडबैक देना, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में हर चीज़ बताना कि इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम आप क्या कहेंगे? नहीं, like I said earlier also that there is another concept which I want to introduce to everybody, the concept of processing information sequentially. It means that when we look at a thing, we look at everything all together, but for a blind person the things have to come through the auditory cues. So whatever information comes sequentially. This is here, this is here, this is here, and he tries or she tries to join it sequential manner. So the cognitive processing of many inputs becomes slightly slower than other children, but that has not shown visually impaired to do badly in academics. They can still cope up very well with academics, but we need to follow certain strategies. The strategies include requiring realistic inputs from peers, parents and others, better descriptions to improve abstract concepts, availability of better opportunities for active participation in the environment. Now, as shown here, realistic inputs means that when we talk, somebody is saying that black is a color of bandit, somebody should correct and say no, black is a very nice color to wear in the evenings. Somebody has to refute that and tell them no, black is worn by many people, black is worn in all parties, black is worn in, if you see that in America and all these western countries, black is the color of all celebrations. जी. And similarly white if we wear as a widow, then somebody can also wear as a bride. White is worn as a bride, white is worn by a bride also. So the thing is that this kind of stereotypical thinking needs to be removed, and this can only happen if some realistic input, some good examples are given to these children, and again somebody has to keep telling them no, this is not there, this is how it is. Their limited inputs which they have through their own limited experiences need to be supported by inputs from a lot of people around them. Second I said was that talked about was abstract concepts. Now what are abstract concepts? I said earlier that concepts of distance, concepts you cannot, things you cannot touch, you can only know abstract. As you grow older, you don't touch everything to know, you don't have to see everything to know, you know that this is like this, you don't have to go and see a thing. You are now grown up, you might not be realizing, but that is the stage when abstract concepts are being developed. So you start knowing things without looking at them, that this looks like that, even if it is not in front of you. This is where they need another support. They need feedback, they need information, they need to develop their abstract concepts. If this is not done at this stage, then what happens is their deficit becomes accumulated, and as they grow older they are not able to do so well in higher studies. So to remove that kind of lacuna, it is important that abstract concepts have to be taught very well.
and active participation opportunities like meeting other people, going with other children for picnics, for recreation, for movies, for parties, and for any activity. The teachers should encourage these children to be a part of all these activities. Sometimes what happens is the teachers get scared, नहीं इसको चोट लग जाएगी तो हम नहीं लेके जाएंगे, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम नहीं लेके जाएंगे, इसको responsibility नहीं दे सकते. They should be given responsibilities. They should be also made monitors in the classroom whenever their opportunity comes. They should also be given responsibilities like disciplining the class. They should also be scolded like other children. It's not important that you should always keep overprotecting them. Half of the information they don't get is because of overprotection, that they cannot do this thing, or they will be feeling bad about if somebody says something to them. So all these things have to be thought about, and these children need to be actively involved in all the activities of the school like other children. The moment you protect them or the moment you segregate them, their active participation is not there, they don't learn. And as a result, why are we emphasizing so much on inclusive education now? Because we feel that when blind children stay with blind children, they hardly learn anything because they all have the same kind of deficits. But if blind children stay with a sighted child and gets input from the sighted child, hears things from in their groups and all that, they develop better. मैम जैसे आपने ओवर प्रोटेक्शन की बात करी और मतलब कहा कि इस वजह से उनको चांसेस नहीं मिल पाते एक्सप्लोर करने का, तो हमने जैसे आमतौर पे भी देखा है कि अगर हम मार्केट प्लेस की बात करते हैं, शॉपिंग की बात करते हैं, तो कई पेरेंट्स और टीचर्स ये सोचते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको ठीक से बात नहीं कर पाएगा, चीज़ें खरीद नहीं पाएगा, तो उनको मार्केट प्लेस में भी नहीं भेजा जाता है. एक्चुअली ओवर प्रोटेक्शन सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ही नहीं प्रॉब्लम, बाकी बच्चों के लिए भी होते हैं. हम लड़कियों को कई बार ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज इतनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कंट्री में, तो कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं. इसी तरह विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भी कई बार बहुत ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है. माता पिता कई बार ये भूल जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर तो उनके साथ दे आर नॉट गोइंग टू स्टे विद देम ऑल देयर लाइव्स, एंड एज अ रिजल्ट द चाइल्ड हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट. So they don't allow the child to be independent, and when they're old, they feel that what will happen to this child after we are no more. So I know of a mother who never allowed the child to do anything. As a result, the child did not know what was money like, what a 100 rupee note is and what a coin of 1 rupee is, while other blind children knew what money concept is. But this child did not learn that, and now when the mother is no more, the child is not able to meet anybody, go anywhere. We should not overprotect them to that an extent. As I said earlier, that they have to be given responsibilities like other children, and they will enjoy it and they will develop better. So this is very important, and I think cognitively, and even if teachers want these children to do well, it is more important for teachers to actively involve them in responsibility tasks, in leadership tasks, in social networks and social activities, all these things. Their talents have to be developed. Ma'am, in every attribute, this parental counseling and family support is very much important. Very important. And I think parental counseling and environmental support is not always important to have a very trained counselor. If teachers have this information, if they know this can happen, if they read on their own, they listen to talks like this, they can do a lot of counseling of the children also. मैम जैसे अभी हम फैमिली की आपने बात करी, उसमें मतलब एक कॉमन चीज़ हम देखते हैं कि फैमिली में अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, मदर इज़ ऑल्सो वर्किंग, फादर इज़ ऑल्सो वर्किंग, और अगर किसी काम की अगर हम बात करते तो पेरेंट्स कहते हैं चलो हम कर देते क्योंकि टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर थिंग पे हम इतना टाइम स्पेंड कर सकें. और दूसरी बात फिर एक जॉइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली की भी बात आ जाती है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे की पर्सनालिटी पे? एक्चुअली जितने भी इफ़ यू हैव रेड एनी न्यूज़पेपर आइटम्स और केस स्टडीज, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव डन वेल in school or in college, who have topped their classrooms, visually impaired children, have had very supportive parents. I know of a girl who got 90% in her boards. Her mother left her job and learned Braille to teach her Braille. So if you feel that parents are very busy, they are not able to give time to that child, then I think they should forget about the child's development completely, because when you have a child, you have to give, otherwise you have somebody else, like a grandparent, like a sibling.
somebody has to develop this child, but after, and you know, effort should be made to make that child as independent as possible. But once the child is independent, he has learned or she has learned what to do, then I think parents have done their job. But initial stages they have to give this input. And I think that work is not more important than your own child, then don't have a child. जी मैम, जैसे कि इसमें हमने कॉग्निटिव एट्रीब्यूट में एक आपने बताया था डिसीजन मेकिंग के बारे में, तो देयर इज अ क्वेश्चन व्यूअर इज आस्किंग कि अगर डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा हर चीज अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकता है, तो इन केस इफ द चाइल्ड इज नॉट शेयरिंग थिंग्स विद द पेरेंट्स और वो फ्रेंड से शेयर की जा सकती है, बट हाउ कम ही और शी विल नो, उसको कैसे पता चलेगा कि जो गाइडेंस उसको मिल रही है फ्रेंड से वो ठीक है या नहीं? देखिए, इवन विद वुड यू से दैट पेरेंट्स जो गाइडेंस देते हैं वो 100% ठीक होता है? इट इज़ नॉट लाइक दैट. द थिंग्स आर चेंजिंग, देयर आर जनरेशन गैप्स. पेरेंट्स समटाइम्स ऑलवेज वांट टू से समथिंग इज what we feel is that the child makes mistakes and learns from his or her own mistakes. If he gets some guidance, he tries it out and he thinks it's not turned out to be good, he will try again with some other solution. So this is how one learns. You and me have learned also like this. So we all make mistakes, we take guidance, we still make mistakes, then we pick up which is the best solution, and then we learn like this. So this is what happens. So you have to learn by trial and error. Always you have to make mistakes and to rise, you have to fall if you want to rise, isn't it? So this is what happens with them. They have to take guidance. Whoever can give them guidance, they can try it out, they can use their own thinking, and still if they feel that they have made a mistake, they can rectify it next time. Like we say that failure is the first step to the success. Yes. That's what I also feel. So I think that guidance is important. Decision making, to encourage decision making. And once a child makes a decision which may be a bad decision, one should still encourage the child. The next time the child can make a better decision. Not this, तुमने तो ये किया तो अब तो ये खराब हो गया. Many times I do it to my child also. What have you done? Why did you do this? The moment we start talking like this, the child will always be scared of taking decisions. Will not develop confidence of taking decisions. जी. तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि अगर हम कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट इम्प्लीकेशंस एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि क्या क्या डिसीजन मेकिंग या जजिंग और किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम इसको कंसीडर करते हैं. ओवरऑल अगर हम देखें कि जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वी आर लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स इटसेल्फ, और ट्रायल एंड एरर मेथड, जब तक हम उस चीज़ को कैरी आउट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं देंगे, तो उसका हम नहीं देख सकते कि रिजल्ट हमारे फेवर में है या नहीं. तो उसके लिए हमें उस चीज़ को जो भी हम सीखना चाहते हैं या जो भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उस चीज़ को कैरी आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसकी बाकी की डिस्कशन हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday.
ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने एक फिजिकल एट्रीब्यूट डिस्कस किया, एक कॉग्निटिव एट्रीब्यूट डिस्कस किया, और उस एट्रीब्यूट्स में हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, स्ट्रैटेजीज क्या हो सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया। आइए देखते हैं कि और जो इसके दूसरे एट्रीब्यूट और कौन सा हो सकता है और उनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एडोलेसेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं
स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेस होता है, जो चैलेंजेस आते हैं, जो चेंजेस हमने देखे, तो ये स्ट्रेस जो होता है इसका रीज़न इमोशंस भी होती हैं. लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन विद देम फिजिकली, कॉग्निटिवली. It leads to a lot of changes in the emotions. So I'll be now talking about the emotional attributes which have been given a lot of importance in all the books. All the experts have been talking about it. They think adolescence is nothing but emotions, changes in emotions. So let's come to this important aspect. Emotional attributes in adolescence involve confidence building behaviors, masking these behaviors mask insecurity like appearing selfish, egocentric and rebellious, developing positive relationship with the opposite sex, requiring positive feedback from peers and families for building self-esteem and social acceptance, adjustment to changes associated with adolescence, struggle with peer pressures, concerns about life and work in the future, and in addition to teen emotional concerns. Now these are the emotional attributes associated with adolescence. Let's go over them one by one. Confidence building behaviors. Many times you would have seen an adolescent child coming in, talking loudly, being rebellious, or even trying to act out, say things which you will feel what has happened. You will find this child is becoming too selfish. This child is too selfish, but this is a way of somehow controlling their anxiety, their stress. Somehow they want to act out their behaviors to control their own stress, their own emotional changes which are coming in their mind, and also the changes which are coming in their body. Now positive relationships with the opposite sex. This is the time when your physical attributes and your sexual characteristics starts becoming visible and you started getting interested in the opposite sex. Now this is a stage of real emotional turmoil, because for getting interested in opposite sex you should look good, and when I come to visual impairment I will explain how it can affect a visually impaired child. So these relationships, this awareness of opposite sex starts developing at this stage. Then positive feedback, like they want to know, the children want to know that they look good, they are doing good, people are liking them, they are popular, and if they don't have this kind of feedback from others, their insecurities multiply and they may become more aggressive, they may become more rebellious. So all these things from feedback from others regarding how they look, how they are behaving, how are they doing academically, all these things become very important. Now many physical changes which occur in their body, they also need a lot of adjustment mentally, because a child may have a deep voice but not a fully deep voice, so his voice may crack. So these kind of changes are happening, and also the body may become suddenly very tall and lanky, the person may look lanky. In case of girls, she may start having a bit of hair on her face which may not look so good. So these kind of things, adjustment they need to make to the changes in their body. Now this leads to a lot of stress in them, because they feel that they how will this happen, how will they look good to the opposite sex. So all these things make a difference. Now there are a lot of peer pressures at this stage. In our culture also we have seen people have started smoking so early, people have started drinking so early, people like to dress up in a different way. So these kind of peer pressures to conform to the peer is always there. So this kind of thing, if they are not able to do it, or their parents are not allowing it, or they have some kind of conflict, leads to a lot of emotional strain. Then they start thinking about the future also. What are they going to do? What are they going to become? How are they going to support themselves? What should be their main vocational line? So these kind of concerns also cause a lot of emotional turmoil in these children. And as a result, these children, as I said earlier, need a lot of positive feedback, that they are to build their confidence and to go through this period without too much stress and strain. मैम लाइक इमोशनली अगर हम बात करें तो एट टाइम्स ये होता है कि मूड फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, और स्विंगिंग होता है कि एट टाइम्स दे आर वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, एंड मतलब थिंकिंग अपने बारे में सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो उस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो हम एक बच्चे को किस तरीके से काउंसिल कर सकते हैं?
You know, mood swings generally are related to a bit of depression also. There are certain things which are not happening good in your life, and certain things you want them to happen in a different way, but they are not happening in this way. The child may just end up not sleeping well, not eating well, may have mood swings. Now, in this kind of thing, again I said, peer and parental support. I think the first support which has to come is through parents. The parents have to keep an eye on the child to know why that person is, supposing the child is being academically, too many academic demands are on that child, and the child is not able to cope up. Like I've seen visually impaired children who are going to schools at this time 9th, 10th, इस तरह के stage में they are studying for their board, they are not able, they need to have more time to do their braille and all these things, so they become very stressed, and at the same time they have this pressure of looking good, relating to other this thing, doing what the other children are doing. So since they are slow in many ways, so this kind of stress happens in them, so all this kind of depression can come in with low self-esteem. So the parents have to be conscious and try to boost up, motivate, and build up the strengths of the child. जी. Every child cannot sing, every child cannot dance, every child cannot do academically well, every child is different. So in the same way, your child may not be like any other child, but your child may have some strengths. The parents, it's important for the parents to realize their own child's strength. Supposing he can paint well or she can sing well, anything like that, any strength the child has, the strength has to be developed and the positive feedback has to be given. जी. So that's very important. Now, what are the implications of these emotional changes and emotional attributes for children with visually impaired? Lack of self-confidence as acts of rebellion thwarted by their inability to see who notices them, cannot discern negative and positive expressions of basic emotions and therefore at risk in social situations, difficulty in relating to opposite sex and peers because of delays in perspective taking and reciprocity, difficulties in expressing intent through non-verbal language, negative social behaviors like mannerisms, unusual language patterns, self-centeredness, etc., rejection because of being different, overprotection leading to social immaturity. Now, these are the implications. Let's go over them one by one. The first thing we talked about was lack of self-confidence, which is compounded for the visually impaired as acts of rebellion, the acting out and talking loudly and egocentric acts may go waste for that child. The child may not realize that anybody is noticing. Basically, these acts are done just to make other people notice. And when they are not noticed, the child doesn't know that the others are noticing them, then the child does not fit in the social cliques. What others are doing, what others are gaining out of it, the child is not gaining. So he is not able to relate to his peers in this way at all. So the kind of developments which are having naturally in others may be thwarted in a visually impaired child. Secondly, I feel that the expression of the other person, if I am talking to you and you don't know whether you are liking what I am saying, I can come to know if I can see you that you are not liking or you are bored with my talk. जी. But for a person with visual impairment, the child doesn't know. He doesn't know whether the person who's standing next to him is liking what he's saying. He cannot see the expression. So that is a very important thing for social situations, because if you sometimes I've seen a visually impaired child may keep talking and the others may walk away and this child may keep talking or make they make faces at him. So this kind of thing, sometimes when the child comes to know the other person is no longer there and is walked away and not even told him that he's walked away, he will feel very, very humiliated. So social situation, in social situations, this seeing no expressions of others makes this child at risk. Then I talked about difficulty in relating to opposite sex and peers because of perspective taking and reciprocity. Now what happens is, if somebody approaches you and says hello, that person is very welcoming and this thing. For a blind person, sometimes the blind person doesn't understand what the person wants. जी. And reciprocal nahi hota. I mean, he's not able to or she's not able to reciprocate in the same way. The same way, he doesn't know whether the person who's talking to him or her is talking in a romantic way or talking in a friendly way. That kind of perspective taking the person does not have, because he is not able to see the expression. जी. For a sighted individual, he can easily make out what kind of interest the other person is showing, but for a blind person it's very difficult to make out. So perspective is not there,
cannot make out Interpret ही experience, नहीं कर सकता वो। experience भी नहीं है, जी। and then expressions भी नहीं देख पाता, तो this kind of reciprocal behavior becomes difficult, which again isolate them. जी। Then one talks about difficulty in expressing intent through non-verbal language. We know non-verbal language, where non-verbal cues, your eyes, your lips and your body language, it's very important. We call it a non-verbal language. It's not available for a blind person. So that kind of lacuna is there, and that makes a lot of difference in social relationships. Now also the language patterns. Sometimes you would see a blind child repeating words. Sometimes you will find that blind child is looking at this place and talking somewhere because he doesn't know the location. The other person doesn't know how to relate to the blind child, so he may or she may not even make that child aware where that person is standing. So these kind of language patterns also develop. Sometimes the child may repeat things, and self-centeredness, because the child has to look after herself or himself, and has to move on his own, or it's not like going in a group like other people, talking naturally and sharing things. It's not like that. So the child appears to be very self-centered. And the final point was overprotection. Now we discussed that earlier also. Overprotection is a very a kind of rejection, I would say, because sometimes when you overprotect a child, the child is not able to develop maturity in social situations. जी। The child doesn't know what to say to which person, doesn't know how to relate to people, and social immaturity finally leads to social segregation. For a visually impaired child, generally the child is overprotected, not only by parents but also by the teachers, by their other colleagues also, peers also. Like they will say, इसको ये मत कराइए, ये गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगा, or he won't be able to, or she won't be able to go there. Who will take her? Sometimes they have to be guided by sometimes even for somebody for movement. So even that kind of thing people don't want to do. So as a result, social immaturity develops. So this leads to a lot of stress and lot of segregation for a person with visual impairment. मैम लाइक जैसे एक सोशल सिचुएशंस की हम बात करते हैं, आपने कहा सोशल इमेच्योरिटी होती है और पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है वो ओवर प्रोटेक्शन का होता है। तो कई जैसे हम बात करते हैं पार्टीज़ में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, अगर बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट है और साथ के साथ जैसे हमने बात करी थी कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, तब पेरेंट्स को ही दे आर फीलिंग वेरी कॉन्शियस एंड इंट्रोवर्ट की, मतलब लोग देख के सोसाइटी में हमारे बच्चे के बारे में क्या कहेंगे, और मतलब एक उनकी एक थिंकिंग पैटर्न बन जाती है कि इनको ना ही लेकर जाए, इन्वॉल्व ना किया जाए तो ही बेटर है। एक्चुअली मैंने पहले भी ये कहा था, एंड आई से इट अगेन, that acceptance of a disability is much more important than anything else. If the child accepts his own or her own disability, and the parents also accept the disability, this is the first and foremost step in any behavior. If that is not accepted, if you're not you're always conscious about this, that our child is like this and we should not be mixing, we should not showing, it's a stigma. Basically what this is, the stigma है, इसकी बहन की शादी नहीं होगी या इसका ये नहीं होगा, लोगों ने ये देख लिया. This kind of stigmatizing, this kind of prejudices have to be driven through awareness programs. So one has to be aware that anybody can be disabled, have disability. In our education programs, we always say that it's not only disability. I would say every child is different from another child. Now some child is a dark child, some child is a fair child, some child is a fat child, some child is a tall child. Some children can draw well, some children can run well. How can you say that every child is the same? Every child has some strength, and disability or blindness is a difference. The blind child is different from another child because he cannot see, but otherwise he can think like others, he can run like others, he can talk like others, he can develop everything else except he cannot see. So all this thing which he cannot get through his vision has to be given to him through other mediums like auditory medium, through touch medium. If all that is given to him, all those experiences are given to him and her, why should one be ashamed of having a blind child? Experience by the remaining senses of the child. Remaining senses using the other modalities to develop the sense that education, I think, I'm sure you must be having some program on education also. We always need a multimedia presentations for these children. If you are a teacher, you have to, in the
class when you're writing on the board, you have to talk. जी. So all those things, Auditory stimulation. auditory stimulation is there. When you're writing on the board, you have to make the child sit in the front seat, not in front of the light, so the glare doesn't come. So all these things you take care. So except for that, the same way if you have a child who falls sick or he or she has asthma, so the child has to have proper oxygen. So it's like that kind of a difference. So why should one be so ashamed of having a disabled child? So this is acceptance which has to come through either counseling or through teachers interaction with the parents, or if the parents don't accept, how will a child accept his own or her own disability? And if the child would not accept his or her own disability, he will never have the confidence to face the world. So this is the first and foremost. You have talked about a very nice issue, that parents have to be first accepting for their children, whatever kind or whatever looks or whatever disability they have. जी. So now we come to the strategies. The strategies for overcoming emotional attributes would be positive feedback from peers and family members, need to be taught how to interpret verbal messages, need to be taught attributes of popular teenagers so that they can assimilate them, developing independence and social maturity, acceptance of one's capacities and limitations in a realistic manner. The last point we just discussed. When we talk about positive feedback from peers and from others in the environment, it's important that the peers also sometimes show that they like this child for what the child is, not that the child has to go and find friends. The friendship should be normal, natural, like between any other children. So this kind of thing also makes a lot of difference in their relationship. And I find that when I say need to be taught how to interpret verbal messages, here it's very important that somebody should tell them that this is what the other person is saying, and that is what the other person, this verbal messages, if they are not able to interpret, it leads to a lot of risk for them in social situation. They are at risk, because if they don't understand when the person is laughing and saying something means something, and the person is in a stern voice means something, if the person is getting bored, talks like that, you should be able to judge that the person doesn't want to listen to you. If you go to a class, I go to a class, take a lecture and find half of the people sleeping, I come to know that these people are not interested in listening to me. For a blind person, this is not available. So these kind of, since vision is not available, he should take cues from the verbal messages, which also he has to learn. If he doesn't have that learning, then he is always at risk in social situations. Then when we talk about popular teenager attributes, like what is the going clothes people wear, what are the kind of slangs teenagers, his own or her own classmates are using, what are the kind of activities they are engaged in, are they driving, are they going to some pubs, or are they going in a village, you would say they are just hanging together, playing cricket together. जी. So anything they are doing together, the popular behavior they must understand, so that they can assimilate it, copy it. They know to bring it in themselves. It's very unfortunate that people don't expect this from a blind child. They'll say that itna hi bahut hai, isse zyada nahi. They don't want that child to behave normally. They don't expect that child to behave normally. So nobody teaches him those kind of things. मतलब ग्रुप में रहना और उस तरीके से फिर सोशल एक्टिविटीज में वही involve करना होना. जो बाकी बच्चे करते हैं. ये people don't even think that it is important for these children, but it is equally important for these children, and because they are not getting it, others can take it on their own, but because they are not getting it from their surroundings, they get into a lot of depression and lack of motivation and poor self-image. Then developing independence and social maturity. What you will find even in schools now, what you find is that for these children, most of the decisions are either taken by their parents or they are taken by their teachers. These children are never asked what do they like. The first thing one has to promote is their decision making and their independence. As a result, they can take decisions in social situations. They can decide what they like, what they don't like, where they want to hang out, with whom they want to have a friendship. All this, they have to start taking decisions.
decision making is a very, very grey area for visually impaired, because they are never asked their viewpoint. People don't expect them to give their own decision till they grow into adults. उनका खुद का ये व्यू पॉइंट होता है कि ये बच्चे क्या हमें मतलब डिसीजन मेकिंग ये क्या कर सकते हैं, इनको जैसे एक बात कहें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट, तो फिर वो डिसीजन में क्या हेल्प I think also it's an over protection. People take decisions for them thinking that this person needs to be protected. He need not be exposed to the bad things in the world. The child needs to be protected. So filter, generally you filter information. You don't, that is why their choices are less, their decision making is poor, because you don't give them the reality of the world thinking this will hurt this person. Now if somebody is not wanting to relate to that person, the parents or any other person will not tell them, because they'll feel these people would feel hurt. But somehow they have to be exposed to the reality. Tomorrow they have to live alone, and the more independent they are, the better they have their lives. I know a person who wanted to fly in an aeroplane. He was an adult, visually impaired adult, and he went to the airport, and there he asked somebody that where are the stairs, take me to the stairs, I have to go to the first floor. Now he wanted to do that himself, and he only wanted that person to take him near the stairs. Now the other person left him near the escalator के पास तो वो blind आदमी चढ़ ही नहीं सकता. Again he became dependent on others. So somehow our society wants to keep this dependence in them going on, or they are not aware that these people can be independent. They always think that they need somebody to be with them. So that makes a lot of them at risk for social situation. Now acceptance of one's capacities and limitations. Now we were discussing it earlier also. It's very important to understand that you have this disability, and as a result you may not be able to do certain things like others. You may not be able to drive, so you have this limitation, and you may not be able to run without a guiding dog, or follow the path. You need orientation and mobility training. So these are your limitations. You have certain capacities, certain limitations. So even if you try to be like your peers, you should not be to that an extent that you copy everything what the others are doing, and try to copy them, imitate them. So this kind of thing I feel is important, that one should accept one's disability. मतलब every individual has its strengths and limitations. मतलब अगर हम एक individual की बात करते हैं तो उनमें strengths भी होती हैं, limitations भी होती हैं, but we should look for the positive part to have a good personality of that individual. तो अभी हमने बात करी थी emotional attributes की. इसके बारे में और information जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद. This is time for a short break. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है. Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं. NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है. जिसके उपरांत वे मंदबुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं. क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक
ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंदबुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. So coming back to our discussion, अभी तक के हमने अपने सेशन में इट वाज रिगार्डिंग एडोलेसेंस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी, जिसमें हमने देखा कि फिजिकल एट्रीब्यूट, जिसमें हम बहुत मेजर चेंजेस देखते हैं मेल और फीमेल में। फिर हमने बात करी एक कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स की, और बात करी हमने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल एट्रीब्यूट्स की, और इसके हमने देखे कि डिफरेंट इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और इन इम्प्लीकेशंस को ओवरकम करने के लिए व्हाट स्ट्रैटेजीज वी कैन फॉलो। सो वी विल कैरी ऑन दिस डिस्कशन और एक्सपर्ट से इसके बारे में और जानेंगे। Thank you. I have talked about emotional attributes, as I said earlier, that they are very important for this stage. I will now want to conclude my discussion by talking about cultural differences.
there are cultural differences between developed and developing countries, differences between rural and urban settings. Economic productive activities in a country does not allow the luxury of testing alternative identities. What it means, this is a very important thing to understand after all this discussion. We have been talking about identities, we have been talking about driving, we have been talking about wearing good clothes, we have been talking about going to parties. You know, this may be quite a fashionable thing in the developed countries, but in our countries, because many of our these children are in rural areas, we find that they do not have so much stress on developing identities. The culture doesn't stress on developing identities, and also the economic needs are such that people may not give importance to these kind of things. How's the social behavior, how is the social relationship, how are friends, how do you go and become popular. These kind of things, we don't think so much about these things. I am sure many people will agree with me on this. Generally what happens is, in our schools, we think that the person should be doing well academically. He should be getting good marks so that he can get a good job, he can be independent, and he can live life well, get married, have children. This is the way, this is the kind of a framework in which our culture functions. And I think this is something, we need to change also, but this is what the truth is. So when we talked about identities, emotional attributes, these may not be important at all. People may think, what is this, ye to hota hi rehta hai, ye to changes hain apne. But at this stage, if these kind of interventions are not made, which I suggested, it may, when the person grows up, he will not do so well in his job also, he will not do well in his family life also. So all these things do make a difference. About the employment thing, I think it's also very important that we have so much stress on employment. Right from the beginning, we feel that the child at this stage should only concentrate on studies and do well to get into a good profession and employment, because economic needs are so high. Because we see that adolescence is a time period, जैसे आपने बात करी थी कि हम एक डिसीजन मेकिंग आते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, और इसके बाद में अगर हम देखेंगे वी आर टुवर्ड्स द कैरियर ओरिएंटेड टाइम पीरियड, और उसमें मतलब एवरीबडी वांट्स द चाइल्ड इटसेल्फ एंड द पेरेंट्स की अच्छे से सेटल हो जाए, एंड द चाइल्ड शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वेरी वेल. But let me tell you, Kavita, even economic independence entails a lot of things. When you go for an interview, your personality is important. Employment is important, I agree, and there are limited choices for persons with visual impairment, because most of the time they are not given the kind of environment they need to develop themselves fully well. So they have a lot of limitations. So they have limited opportunities for employment, and as a result, when they go and to seek the employment also, they may not fare as well in the interviews as other people. So there are reservations for them. But for the personality development, efforts are not made. So as a you can be getting an employment, but not up to your satisfaction. And of course there are so many barriers, and including the barriers of development. I think they all compound together to make a blind person really in need of rehabilitation, I would say. Otherwise, if you make the person independent right from the beginning and give him or give her the environment that the child requires or he requires, work on the personality issues also, work on the emotions, develop self-esteem, develop self-concept, develop social relationship, then that person, whether blind or sighted, would be successful in all situations, would be able to cope up, take decisions, would be doing better economically also. He'll be himself is will be the productive member of the society. But unfortunately, I think there is a lacuna in this regard in our culture. Like my second point, economic productive activities in our country does not allow the luxury of testing alternative identities. I was just discussing with a colleague that my son would like, he's in a very good job, but he would definitely like to get into business. He doesn't like to work under somebody, and secondly, he thinks that what he can earn through salary is nothing compared to what he can earn in a year of business. But most of the time, as parents, I or and many of my colleagues would also say, you have a secure income, you have a secure job, why do you want to put that job at risk? Even if the person has no job satisfaction, even if the person
feels that he is killing himself or herself every day by doing that job, then also that person continues, and he or she does not talk about, I don't like it, I don't find any satisfaction, I don't like this environment, I think I can grow better if I get out of it, I can try something else, see how it works. Because of the economic problems and because of concentration or emphasis on economic productivity, these kind of identities or these kind of individual desires and risk taking behavior are always discouraged in our culture, compared to developed countries where there is dignity of labor. People may not go for higher education so much because it's very costly. They start working right after 16 years, they become independent. They have to earn their own living, the parents stop supporting them. In that kind of scenario, they are happy with earning little and enjoying their life, developing socially also. Personally, they have good networks, their social skills are very good. So these kind of cultural differences are there in our compared to developed countries. But within our culture also, there is a difference between rural and urban. In urban life, we will see people going in fast cars, driving, having good cars, wearing good dresses. But in rural places, these children are much more innocent. I feel that. I don't know if somebody else has some other opinion, but I think they are not exposed to these things, which may be for the good or for the worse. I don't know. But this is the difference between urban and rural. People are more rebellious, people are more conscious, they answer much more to their parents than compared to rural villages, where I have seen where children are docile, parents have, even the grandfathers have a say, parents have a say, and everything is like that, if something is in the family, nothing else is important. So these kind of cultural differences, cultural ethos are there. Different perspectives are there in among the people, and different socialization is there. Different environment leads to different kind of socialization. But I think for a child with visual impairment, if I see the examples, I think a child with visual impairment in an urban setting is much better off than in a rural setting. A child with visual impairment in a segregated school is worse than a child in a regular school because of the exposure the child gets. So all these things are there, and depending where the child is located, I think it's a universal fact that let the child develop, grow up to his or her own potential, give all the support possible, psycho, social, physical, every kind of support possible, so that the child does not feel handicapped. Handicap is a social disadvantage. I may not be speaking in English, you may be speaking in Hindi better than me. I am handicapped in Hindi, you may be handicapped in English, but if we learn English, or I learn English or you learn Hindi, our handicap will be overcome. Basically, the social disadvantages, this handicap only comes when we cannot have the environment where we can find, up to our development up to our potential. Generally, in education, I am an educationist, and I find that failure does not happen with the child. Always it is the failure of the school, because the school is not able to teach the child the way the child learns, the way the child needs are. If a child cannot see and you cannot give, do not give things for him to read and write in braille, if you don't give that child large print, then the child will fail. The approach is not child oriented. This is more of, and also the school reforms are not there. They feel that there is a defect in the child needs to change, the child needs to fit in everything, which is not possible, and one has to be flexible in these things. जी. तो मैम, जैसे कि आज का जो हमारा सेशन था, इट वाज रिगार्डिंग एडोलेसेंस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, और इसमें पूरे सेशन में हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया कि एक एडोलेसेंट एज टाइम पीरियड होता है, एक इंडिविजुअल डिफरेंट एज टाइम पीरियड एजेस से गुजरता है, फ्रॉम द इन्फेंट टू द ओल्ड एज, और उसमें एक एडोलेसेंट एक पार्ट होता है जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट, इमोशनल एट्रीब्यूट एंड कॉग्निटिव एट्रीब्यूट. हर एट्रीब्यूट का अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, और उनके इम्प्लीकेशंस होते हैं इन रिस्पेक्ट टू द विजुअल इम्पेयरमेंट. और बट ऐसा नहीं है कि हम उन इम्प्लीकेशंस को हटा नहीं सकते या हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते. उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें अडॉप्ट करनी होंगी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आर देयर फॉर फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव एट्रीब्यूट्स, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट एंड काउंसलिंग, और टीम वर्क का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
इसमें मतलब अगर हम देखें कि डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट लेवल्स पे हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, and we should look for the positive part of the child, because learning is an ongoing process, it's a continuous process, and we should think and we should look, हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से उस चीज़ को सीख सकता है. Thank you so much, ma'am, for giving these informations to our viewers. That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much.